Namaskaram, Bihar. As promised, I'm wearing my gamcha and the veshti. We're at an authentic Bihari restaurant where we've decided to serve litti choka and idli sambar on a banana leaf, and over that have an intense political conversation. Make the politics of Bihar relatable to everyone outside as well. What defines this election? Several questions we'll pose. Right inside is a high-profile political table waiting for me, which I'm going to join and pose some tough questions to the politicians of Bihar. Join me. So this is the high-profile political table I was talking about. The food seems delicious. I'll explain the food later, but first let me introduce you to all our political guests here. You have Anukriti of the Jan Swaraj, Syed Larib Akram of the RJD, Mr. Nikhil Anand of the BJP, Mr. Karuna Sagar of the Congress, and Mr. Parimal Kumar of the JDU. And we have NDTV's two Bihari mascots, the most powerful Bihari mascots, dare I say, in journalism in Bihar. Manoranjan Bharati, aka Baba, and of course Prabhakar Kumar. And my thali is just about going to come. There is Alan there, who is the restaurant manager who's brought this thali for me. Alan, explain to me what is there. I can figure out the idli, I can figure out the sambar, but tell me the rest. Can you figure out the chutney also? Oh yes, I can figure the chutney. There's a aloo chokha. Okay. There's a baigan tomato ki chutney. With that litti stuffed with sattu. And you have a salad and mint chutney. Areva, thank you so much, Alan. It's a fantastic meal here. Welcome to the show to all our political guests. We thought the temperature is rising, and we thought with litti choka and idli sambar, we can reduce the temperature and have a nice conversation around it. I figured out that Bihari food, you use a lot of green chili spice vis-a-vis South Indian food, which is red chili spice. Have you ever tried idli with choka? No, today I haven't. Why don't we all try idli with choka? Today I am going to try. Why don't you try I idli didn't. with choka? Anukriti, why don't you try idli with choka and tell me what you think of it? This is as good as Biharis rising above caste equations while voting. So it's a novelty, and I will try idli with choka. Okay, novelty. She's already hitting the first political point that's been made. But tell me something, the image of Bihar. I mean, let's start with the image of Bihar. In the last 10 years or 20 years, there is a sense that other states like Karnataka, where I come from, talks about global economy, Silicon Valley and all that. Has that image changed, or is still Bihar trapped in some of an old image? Is the politics, is the society still revolving around old ideas? Is the new age politics and new age changes to the whole structure come about in Bihar or not? First of all, basically when we think of Bihar, politics matters a lot, and politics has always dominated the idea of Bihar. But I see there is many things beyond this politics. And Bihar has a very rich tradition. And in during 90 to 2005, Bihar, of course, lagged behind in all sense. Like polity, society, everything was on a bickering note. And now, Bihar is a consolidated society. Bihar is looking forward. Not only beyond Bihar, we are going to match the level of other states, but we are looking beyond the boundary, globally even. Looking beyond the boundary, Karuna Sagar, you've been in Tamil Nadu. Let's start eating, though we can all start with the idli and choka first. Let me first try the idli and choka, because I think the choka goes with everything. That's fantastic. But tell me, has Bihar's, the imagery really changed? For instance, are we still talking about producing bureaucrats, politicians, or are we talking about producing engineers, about new age corporates, industrialists? Has that happened in Bihar? You see, when you talk about the image of Bihar, just few days back, Mr. Amit Shah was in Bihar and he called Bihar a Bimaru state. So that's the image of Bihar. Bihar sort of, when the rest of the India, especially the south and the western part of the India was developing, Bihar missed that bus. And today, we have no IT park, we have no textile park, we have no plastic park, we have no greenfield airport. The Beta airport was planned in 2016. After 9 years, we have a boundary wall.
the priority of the government for last 20 years has been wrong. You see, you said that IAS, IPS officers become, because they go outside Bihar, they study and then become, and they stay outside Bihar. But what was required in Bihar was a mass scale of MSME development, which requires less land, less capital, and lot of employment. What was required was skilling. The skilling has totally left Bihar. Bihar is a supplier of unskilled laborers to the developed Parimal states. Kumar, just respond to what Karuna Sagar is saying, that Bihar is still a supplier of unskilled laborers. The IAS officers go outside to study for bureaucracy and they become IAS officers. State has not changed. Respond. First, I will talk about the type of variety of food you have served before us. I'm actually trying. It is I integration think of Litti works very well North with Indian and sambar. South Indian food, and we are the uniting Yeah, factor. it's very nice. Actually, it is Nitish Kumar who look the entire Biharis as their family member. But on the other hand, Congress and RJD type of party are fragmenting the entire scenario, culture, and try to demoralize the particular feature of Bihar. Actually, you know that he is the representative of Tukra gang. Actually, Tukra. yes. Actually, on the other hand, my particular colleague of RJD, he represents the type of party. You know, Lalu Prasad Yadav remained the kingpin of Chara Ghotala. And his son, Tejasvi Yadav, who is accused of 420 cases, you know, particularly on 10th of November, again, the judge will call 420 accused person, Tejasvi Yadav, appear in the court. And it will certainly affect the entire mentality of Bihari youth. Actually, you see, we are democratic person. So your point is, and I'll give the mic to Said Lareb Akram, his point is that if you want to change the image of Bihar from what it is today, the only option is Nitish Kumar, not Lalu Yadav or Tejasvi Yadav, because you are taking the state back. देखिए लिट्टी चोखा के सामने मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ But idli sambar ke samne? हाँ देन वनक्कम मदिया वनक्कम एंड छठ नलवातुगल Okay. मैं गया से आता हूँ विष्णुपद जी और बाबा बुद्ध की धरती है, पीर मंसूर है, सूफी संतों की धरती है। अब बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन की गुंजाइश हर अगले क्षण में है ना। और बुद्ध इसी तर्क के साथ बुद्ध ने अपने ऊपर जो उनके ऊपर जिसने हमला किया उसको माफ किया। अगर आपको ये नहीं गुंजाइश लगती है कि बिहार में जो बदलाव होना है वो हमसे ही होगा, तो ये इसको लकीर का फकीर कहते हैं। Okay. क्योंकि आपने 20 साल में क्या बदला? 20 साल में जो आपने ट्रेनें चलाई हैं, लेबर कॉरिडोर आपने खड़ा कर दिया कि हमारे यहाँ से लेबरर्स जा रहे हैं और जा रहे हैं और जा रहे हैं। और मैंने तो ये महसूस किया है, देखा है, मैंने काम किया है, मैंने लेबर यूनियन के साथ काम किया है। मैयत हो जाती है, डेथ हो जाता है, फौत हो जाती है परिवार के अंदर में, तो कोई चेन्नई से कोई बम्बई से आ नहीं सकते हैं उनके जो आखिरी रसूमात है उसको पूरा करने के लिए। तो बिहार की स्थिति असल में ये है, करोड़ों लोग पलायन करते हैं। उनका आरोप आपके ऊपर, वो आपके नेता के ऊपर में घोटाले का था, आपके पिता के ऊपर में वो चारा घोटाले से लेकर बाकी चीजों की आपके नेता की बात। चारा घोटाला देखिए, मैं बहुत साफ सुथरी बात कहता हूँ। इस देश में आप चूंकि आपके बिल्कुल मैं वहीं जो फर्स्ट फैमिली है उसके ऊपर जो एलिगेशन, मैं वहीं से जवाब दे रहा हूँ। इस देश में बहुत सारे सुधार के प्रयास हुए। कभी बाबा पेरियार भी आए, डॉक्टर अम्बेडकर ने सुधार लाया और बहुत तरह की तंजीमें बनी। कर्पूरी जी बिहार के अंदर में एक बड़ा चेंज लेकर आए। तो ये चेंज क्यों हुआ? किस बात का चेंज था? क्या आप इसको डिनाई कर सकते हैं कि एक खास वर्ग को टारगेट नहीं किया गया है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश के समाज में, और इस देश की निर्माण प्रक्रिया से दूर रखा गया है? तो लालू प्रसाद यादव आपको इसलिए चोर लगते हैं, इसलिए आप चारा चोर बोल जाते हैं आसानी से, क्योंकि आप जगन्नाथ मिश्रा को नहीं बोल पाएंगे। उसके बेटा नीतीश मिश्रा आपके कैबिनेट में है, जिनके रिजीम में जो सो कॉल्ड महज 93 लाख रुपए का जो सो कॉल्ड घोटाला हुआ है वो आपके रिजीम में हुआ। आपका मिनिस्टर, आपका पार्टी है। No, I'll get a response to it. I know it's getting intense, but I want to just point out to two things. One is Nikhil Anand is not eating much. He tried a little bit of idli and chutney. He needs to have idli with choka. And Anukriti has not eaten at all. You're trying to eat. What is the verdict on the food, Anukriti? The
verdict on the food is actually 10 on 10. Okay. Idli and choka, superb combination. So is litti and bangan So, ki but chutney. will and- Prashant Kishore So- be a Jan Swaraj be a so- good so- combination in this mix? They seem very, very intense about their politics. So- Your leader is not even contesting the election. I'm going to come to that. I'm going to come to that. Since we are breaking bread together, and thank you NDTV for this wonderful initiative. Because this is for the first time I'm feeling like we're all Biharis sitting, except of course you're our honorable guest. So we're all here sitting together breaking bread. So for a second, let's just think like Biharis, okay? And for that, all I'd like to point out is in 1990, Bihar was the poorest state. In 2015, it was the poorest state. And in 2025, it remains the poorest state. What is the reason? The reason is for the past 35 years, we've had regimes which have not prioritized Bihar and Biharis. We've had regimes which have only treated our caste equations like vote banks. And that needs to stop. And there's a guy called Prashant Kishore, there's a party called Jan Swaraj Party. For the past 3 years, all they've been doing is trying to make the voter much more aware of, getting above your caste equations, getting above 4 kilo anaz or murga bhat, and vote for your future, vote for education. And by the way, if I start giving the numbers, whether it's from Human Development Index, whether it's from, any of the poverty reports, we will all hang our heads in shame. So let's not, pretend that any of the regimes has done better than the other. Okay. And we're trying to bring about You've that made your change. point, but can you bring about that change is really the question. Let me get Prabhakar and Baba in as well. Baba, first, We can always hope. Do you think Prashant Kishore can actually make an impact in this election, or is it going to go on traditional lines? देखिए ये इलेक्शन याद किया जाएगा कई कारणों से। एक तो नीतीश और लालू के इरा का एंड होने वाला है, दूसरा एक प्रशांत किशोर के लिए भी याद किया जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जितनी अच्छी शुरुआत की ना, टेक ऑफ किया ना, उतनी जल्दी उनकी लैंडिंग होती दिख रही है। यदि आप राघोपुर से चुनाव लड़ लेते तो क्या हो जाता? अधिक से अधिक आप हार सकते थे। लेकिन एक लीडर जो कि लीड करना चाहता है, एक नया बिहार बनाना चाहता है, जो केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स करना चाहता है। केजरीवाल ने तो 10 साल के स्टार्टअप में गद्दी हासिल कर ली। आप लड़ना ही नहीं चाहते हैं, आप राघोपुर से भागना नहीं था, आपको वहां डट के रहना था, चाहे जो हो जाता, तब आप एक लीडर बनते। आप मानते हैं कि Can I please address that? Can I please No, address quickly, that? Can I- Prabhakar, you add to the point and we'll I'd like to. I am a huge fan of Mr. Bharti. मैं बाबा नहीं बुलाती उनको. So जी. So मैं with due respect sir, भागना शब्द पे थोड़ा objection हम लोग लेंगे, क्योंकि रणनीतिकार, he is a political strategist beyond excellence. No, the thing is, he could not have decided. You think he decided in one day after going to Raghopur, okay, today I've decided I'm not going to contest. The thing is, we had always been very, very clear about the fact that Prashant Kishore's contesting would depend on what the party decides. And 243 people, I mean, whatever the numbers are right now, had to be given support. He's the supreme over there. Right. So I mean, if So somebody else decides everyone- for him, I'm not buying that. I'm sorry to say that, but I'm not buying that. A, and B, he's when he says it's about perception. Right. He himself actually said on public record that I'll be either contesting from Karaghar or He said from, if the party decides. He kept saying if the party decides. The thing is, he's the he party. needed. No, he's not the party. 243 candidates is are our getting party. interesting now. He's not the party. We are not dictatorial and autocratic. Yeah, of course. We're not doing Prashant cult Kishore politics. has landed on ground. He has fallen flat on ground. And now, this election is going to be a miracle in favor of NDA. You see, where we started, it was a 3.2 growth rate. 30,000 करोड़ रुपए बिहार का पूरा एनुअल बजट होता था, आज 3.5 लाख करोड़ रुपए बजट है, और 13.2 ग्रोथ रेट है, 11 पॉइंट ग्रोथ रेट है। इकोनॉमिक्स बिहारी को समझ नहीं आएगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आज सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, प्रशांत किशोर किसका वोट काट रहे हैं? किसी का तो वोट ले रहे हैं ना। Whose vote is Prashant Kishore cutting? That's what Baba wants to ask. But I've also learnt one more lesson. In Bihar, if you give the mic away, it's not coming back to you. मैं बाबा का इशारा समझ रहा हूँ। ये निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का भी वोट काट रहे हैं। मैं कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उदाहरण दे सकता हूँ, और प्रशांत किशोर अन्य पार्टियों का भी काट रहे होंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते निश्चित तौर पर देख रहा हूं कि जेडीयू और बीजेपी के वोट्स कहां-कहां प्रशांत किशोर काट रहे हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बिहार जहां पे आज है, जो सुकून है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पर विश्वास है, अति पिछड़ा समाज, द ईबीसी कम्युनिटी, द वुमेन इन लार्ज,
everyone is going to support us, But then why and have we you- will come back in the No, government. no, but then the question that's been raised, sorry, Mr. Karunasagar, is why have you not then declared him as the categorical chief ministerial face? There is still confusion about it. You asked about Tejasvi Yadav. They've declared Tejasvi Yadav as the MGB's chief ministerial face. If it is all about Mr. Nitish Kumar, why is he not the categorical chief ministerial face of the alliance of NDA in Bihar? This question is raised and created by the media. Okay. First, there is no vacancy of the chief minister in Bihar. Nitish Kumar is running the show. Nitish Kumar is leading the government. Nitish Kumar is leading the NDA in this election, and he will be the chief minister. And of course, when the MLAs will sit down, they will choose Nitish Kumar, of course. I have But breaking it news. is we are talking about the process. You See, cannot his overlap Prime the Minister, democratic Home process Minister system have that come MLA and choose said the chief that minister. the Chief Minister will be decided by the MLAs. And today the spokesperson of BJP No, of course is I'm saying that is a process. that You he cannot- is going to See, the process. it is this a debate process. has gone on. Let me get It is to a JDU process. as well. Quickly respond to this. एक्चुअली कांग्रेस के जो तथाकथित पप्पू हैं, राष्ट्रीय पप्पू, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, वो सबसे अधिक समय तक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति को लेके घूमते हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है। अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं कि द एमएलए विल सेलेक्ट द चीफ मिनिस्टर। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ना। वी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म, we particularly respect the constitutional institution like election commission, like supreme court. मेरा एक सवाल, Yes. क्या ये कंफ्यूजन इसलिए आया है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कहा कि विधायक चुनेंगे, आप सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं, चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? जय नीतीश, तय नीतीश। नहीं, तय बीजेपी नीतीश, और आप कहती है समझिए कि इनके चेहरे No, पे no, चुनाव लड़ actually, रहा है, you तभी see तो ना, कंफ्यूजन है। No, उनके चेहरे there पे should not चुनाव- be any confusion. Actually, the status of Nitish Kumar is similar to sun in a solar system. Sun in a Actually, solar yes, system. yes, he is the main asset of NDA. And not only NDA, main asset for Biharis. Actually, but the you RJD see, has been raising as far as the questions about question of health, Jan mental Suraj health, is all those concerned, issues. तो जन सुराज तो स्टार्ट के पहले ही खत्म हो गई। समझिए ये मैं ऐसा मानता हूँ। नो मैं ऐसा मानता हूँ। I'll give that credit to Prashant Kishore that within a short span he has emerged as a very strong third alternative, and people are talking about it. People are talking about him. I don't know the numbers he would get, but he's certainly a strong political force out here, and every party, be it them or them, the NDA or the India Alliance, they're all feeling threatened. And I'll ask you this as RJD. No, one second, Karunasagar. I'll just ask you this question. Just a supplementary question to what he said. The credibility of the RJD is the one that's been repeatedly questioned. Nitish Kumar's credibility, they say, is far better than the governance credibility of the RJD ever, because at least the impression of the RJD, and I don't know about the facts, the impression of the RJD is that there was Jungle Raj in Bihar. Respond to that. जंगल राज के बारे में मैं पहले आपके दर्शकों को बताऊं। जंगल राज बिहार में पटना के अंदर में जल जमाव की समस्या इतनी ज़्यादा थी। मैं अभी की बात नहीं कह रहा हूं। कॉरपोरेशन के हालात के ऊपर में हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी किया था। जंगल राज लालू प्रसाद यादव के ऊपर कोई कमेंट नहीं था। ये वो क्लास है जो कुलीन वर्ग अपने आप को कहता है, जो ब्रांड करना चाहता है पिछड़े अकलियत के लोगों को, दलितों को, कि ये जंगल राज हैं, ये बर्बेरियन है, ये फलाना है, ठिकाना है। ये सब सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं ना, हम लाइव सुनते हैं, कान में हमारे बात आती है। हम तो क्या है अभी, अब आपने सुना गिरिराज सिंह ने इनका क्या शगुफा छोड़ा है ना, बुर्का नकाब और हिंदू मुसलमान राजनीति में आ जाती है इनके, इसके बिना तो इनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। रही बात नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव की, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 1 साल पहले और 1.5 साल पहले का बाइट प्रधानमंत्री का, जेपी नड्डा का और होम मिनिस्टर का आप देख लीजिए, तब तक वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करके चल रहे थे, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। लेकिन क्या डिटोरिएशन आई है, कहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनका मेंटल हेल्थ क्या है, ये स्टेट को जानने का हक है और हमें जानने का हक है, लेकिन अब अचानक से रोक दिया गया। Yes, actually what he is saying na, we are with our legacy of Sushasana, good governance. RJD is with the legacy of Jungle Raj. Actually he mentioned incidents कि भाई कोर्ट ने जल जमाव के कंटेक्स्ट में कहा, हमारे मोबाइल में एक क्लिपिंग है और एक रिपोर्ट है जंगल राज के दौरान का। न्यायालय ने कहा था कि जंगल में भी एक रूल होता है, बिहार में तो वह भी रूल नहीं है। यहाँ अपराधी पुलिस को बतलाकर हत्या करते हैं। यहाँ पे बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है।
जो एक युवा जब नीतीश जी ने यहाँ पे पहली बार ओथ लिया होगा, उस दिन यदि पैदा हो गया होता तो आज 24-25 साल का होता ना। यस यस 25 साल का होता ना। उसके लिए तो कोई दूसरा राज नहीं है, उसके लिए तो आप ही का राज है। तो आप ये 20 साल पुराना रिकॉर्ड कब तक? नहीं, मैं आज की भी बात बोल रहा हूँ। देखिए, मैं अभी नो आई एम नॉट रेजिंग द क्वेश्चन अबाउट लास्ट पर्टिकुलर 20 years. I am saying about on 10th of November again Tejasvi will appear before Raj Revenue Court on the charge, because you know that particularly charge has been framed under IRCTC as well as land for job, and actually he makes wrong allegation of my chief minister that he is mentally ill. You should know that since last 2 months he particularly, my chief minister appeared in almost particularly 80 public meetings. Okay. Actually, whether it is possible for even particularly youth person. He's saying And he is saying no. Actually, you say no. Actually, the workers of जो आरजेडी के, देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी मेंटली बैंकरप्ट पर्सन है, मतलब मोस्ट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, राइट? वो तो शुरू देखिए ना, हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि जो उनकी आईपैक कंपनी वो तो मूर्ख बनाती थी। समझिए, ऐसी कंपनी, ऐसी पार्टी जिसका गठन 2022 में भी हो चुका था। 2 अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा कि पार्टी का गठन हुआ, और उस दिन उन्होंने कहा कि मैं शराबबंदी समाप्त कर दूंगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन यही होगा कि बिहारियों को शराबी बनाना। Let me respond to the JDU. The JDU spokesperson said that Mr. Nitish Kumar is like the sun in the solar system. Unfortunately, the sun has eclipsed. Okay, now we've got And two quotes. today, the health of Mr. Nitish Kumar, and I'm concerned because he is my chief minister too. He's chief minister of Bihar. He is not just his leader. And today, Bihar has become a mockery in national media everywhere, because the way he spoke about women in the assembly, the way he spoke against Manji in the assembly, the way he spoke with Vijay Sinha in the assembly. First of all, you cannot mock at the chief minister just to play your petty politics. See, Nitish Kumar is the person who has created a system of Jivika, and Jivika model has proved that women of Bihar are the most empowered women all over the country. In every state you can compare. 1 crore 20 lakh women are attached with the Jivika system. These are all- They are empowered women, independent women, and it has created a vote bank of a separate identity vote bank, and they all are going to support Nitish Kumar Which is ji, why NDA government. 10,000 directly half 15 Look days here, before. he is talking about Jivika as a vote bank. So Jivika is not a welfare scheme, not. to empower the women, but and my contention was his health, the health of my chief minister, and he has not replied anything to that. He has gone to Jivika, and Jivika has been a vote bank. This is pretty much a metaphor of what's happening in Bihar right now. Anukriti is laughing and saying this is a reflection of what's happening in Bihar. What's happening in Bihar. Blame game between these two. That's why we are Yes, more important. thank you, Veer. So three. I wanted to make two quick points, but thanks to JDU spokesperson Sahib, I have to make a third point as well. Pehla point ye tha, I mean, everybody's talking in Hindi and English. I am comfortable with both, but since we were asked that, this is either way. So basically, the fact that RJD spokesperson very nicely couched the whole corruption thing into a caste dynamics is a little unfair, because Jatiya Jangarna, the caste census that had happened just 2 years ago, we found out how exactly the so-called the really exploited EBC and the entire caste dynamics of the lower पोर्शंस और जिसको हम निम्न तबका बोलते हैं बिहार में, उनका क्या है? उनकी कोई भी उनका विकास नहीं हुआ है. They have not progressed in any which way. So the fact that you have only cared about your own children, that doesn't mean the यादवों का और अति पिछड़ों का और दलितों का विकास हुआ है. सबसे पहले. दूसरी बात, no, one second, about the you like this point, Larib, because in 2022, the National Crime Record Bureau data shows that we've had the highest crimes in Bihar in the past 20 years. This is 2022. JDU
JDU and BJP combined ruling, 107% more than what used to be RJD regime. I have grown up in the RJD regime and I'm also experiencing this regime thanks to this whole sukha nasha, dry kind of alcoholism that has been prevalent in Bihar. ज़्यादा अभी दिक्कत होती है हम लोग को घर से बाहर निकलने में. कोई भी बदतमीजी कर रहा है. इतना खराब नहीं था. And the third crime is, earlier it used to be on the roads, now it's happening inside the secretariat. I just want to bring one observation and get this because I want a little bit of a focused conversation as well. You know, when you talk of Bihar politics, you talk about EBC, OBC, Prabhakar and Baba. Is it purely media and the pundits who are talking in EBC, OBC lines? Is there an aspirational Bihar that is different, which doesn't want to talk in EBC, OBC line? Because other states also see caste is important. But the fact that the entire conversation seems to be on the basis of caste, that there is no one party that gets a majority, why is that still the reality? See, both the faces are true actually. So if you talk to a Gen Z on the street, they are not bothered about the EBC, OBC and the dynamics of the caste politics out there. But as we speak today, Prime Minister is there in Samastipur. He has started his the maiden political rally from Karpuri Gram. He is the mascot of the EBC voters out here in Bihar. So why Karpuri Gram was chosen? Why you start your rally from there? So there is a messaging there. There is a reality of the caste politics which the politicians understand. So both the Gen Z sitting over there, they completely they are not bothered as to who OBC is and what is being done on the basis of the caste. But the politicians in the fray who are actually taking a call, they completely believe. While the BJP may say 100 things, you still fuel caste is the point that Prabhakar is making. See, The optics is of caste. Bihar was a fragmented society and it was very necessary that all the sections is given adequate space in the mainstream. And Nitish Kumar has tried his best. You see that all the EBC community who were given no space in polity, bureaucracy, judiciary, and in panchayati system. Nitish Kumar ji gave 20% reservation to EBC community and 50% reservation to women in the panchayati system. Now they are empowered. They are into the leadership, and now they are leading their own society, community. They have their own grievances. 3% graduates in the Ambitions. entire segment he's talking about. And now graduates, nobody can 86% school ignore the dropouts. 38% of the population. Fray. So it is what our NDA government has done. Okay, Karuna sir. You see, this caste stereotyping of Bihar, I don't agree. The caste is a factor all across the country and it works in politics. But you see, the BJP's politics is, as he said, divide, divide, segmentize the groups. Because, make one group fight against another group ultimately, and then I have one very quick question to Mr. Nikhil Anand, and from an outsider observer, Baba, you can explain, all of you can tell me, if you can have a single party sweep government in Uttar Pradesh, why is it that Bihar always has a fragmented government, a fragmented assembly, which is not a clear majority for any one party? Why is it that? Is it because the divisions are so deep, that the polarization at the grassroots level is so strong that whether you like it or not, this is the reality of Bihar? And as Anukriti is saying, that's what they want to change. See, everywhere NDA contested, even in UP, we have NDA under the leadership of Yogi Adityanath ji and Narendra Modi ji. Here also we are NDA. JDU is the partner, Jitan Ram Manjhi, Upendra Kushwaha and Chirag Paswan is the partner. So it's not a matter, but NDA is very much a decisive collision for the future of Bihar. You see, where I like to come here is that basically this government has been pandering to certain section of society, and the Mahagathbandhan, the Congress, the RJD, we have been fighting for social justice. And They would say that you're also pandering to a society by putting Sahani as the deputy CM page. We are talking about Rahul Gandhi. the society which is the most downtrodden, which has not got the share of the pie in the development process, and the jobs have left them, the money is not there. You got mic on both sides. So
Congress is the villain of OBC and EBC community of this country, and you see, no. You see, today only I saw a picture. I saw a picture. राहुल गांधी का एक फोटोग्राफ हमने देखा सीताराम केसरी जी को की तस्वीर पर उनकी पुण्यतिथि पर फोटो चढ़ाते हुए आज पहली बार, आज तक उन्होंने कभी नहीं मनाया था। आज ये तस्वीर अगर सोशल मीडिया पे आई है, ये साबित करता है कि बिहार में इलेक्शन है और कांग्रेस ने सीताराम केसरी वाज द ओनली elected OBC national president of the Congress party, and he was abused and thrown out of the Congress office. Prime Minister is going to Karpuri Thakur this proves village today. Karpuri Thakur, it is a BJP NDA government which has given the Bharat Ratna to Karpuri Thakur. We have given so much of honor to Karpuri Thakur ji. Karpuri Thakur and as a Prime Minister, he is visiting the Karpuri Gram. It shows the love and affection of Narendra Modi ji for Karpuri Thakur and the EBC and the downtrodden of this brought down. Sir. Prime Minister is going there. He should. Your ally is asking for time. The Prime Minister should ask for forgiveness from the soul of Karpuri Thakur, whose agenda he derailed. His party derailed. मैं एक बात बोल रहा हूँ बहुत सीरियस। सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी जो नौजवान देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये भ्रमक अंडरस्टैंडिंग है समाज में कि जो कास्ट की बात करता है वो जातिवादी है। मैं इसको क्लियर कर दूं। जातिवाद वो है कि जब वो जातियां जो वर्चस्ववादी जातियां हैं, जब वो लामबंद होती हैं किसी को सताने के लिए, और उसकी सामूहिक चेतना जो है वो जातिवाद है, और ना कि पीड़ित जातियों का लामबंद होना वो जातिवाद है। ठीक है। दूसरी बात बाबा उसमें ऐड कर दिया बाद में। मैं एक बात कह रहा हूं, मेरा सवाल ये नहीं है, ये 20 साल 25 साल जो कर रहे हैं वो करते रहे। मैं नौजवान हूं, आप यकीन माने कि सिर्फ ग्रेजुएशन बिहार अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे लिए। 3 साल में मैं ग्रेजुएट नहीं हो सकता। आपको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, आपके फिंगर टिप्स से, आपके बेंगलोर से और चेन्नई से, KPMG, डिलॉयट, एक्सेंचर, TCS, आप यहां जाकर सर्वे कर लीजिए। 70% अकाउंट्स पे बिहार के युवा है। 70%, मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपको। और बंगाल सर, ना मैं दे रहा हूं सर, मैंने उसमें काम किया है। हाँ, क्लेम है सर। अकाउंट सेक्शंस पे बिहार के युवाओं का पकड़ 70% है, और असम और बंगाल के भी है। 20 साल में आपने क्या किया, मेरे लिए क्या किया, वो जवाब दीजिए। देखिए, एक्चुअली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि महागठबंधन स्टिल हैव द कैरेक्टर ऑफ चरवाहा विद्यालय। ये लोग बोलते हैं पलायन। अभी एक्चुअली कुछ समय ये नहीं सुनिए, अरे जन सुराज की बात छोड़ दीजिए। जन सुराज तो इस बार वोट कटवा भी नहीं, ये रणछोड़ साबित हो गए। ये वोट कटवा भी नहीं रहे, ये रणछोड़। आज सुने हैं, जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि आफ्टर इलेक्शन ही इज लिविंग बिहार छोड़ देंगे। वो आंध्र प्रदेश में जो शराब माफियाओं से क्या पैसा इनको प्राप्त हो रहा है, वही जाकर ये बसेंगे। जहां तक आरजेडी और कांग्रेस का मैं प्रश्न नहीं, अगेन आई एम सेइंग ही वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ कि भाई वहां दूसरे राज्यों में बिहार के लड़के काम करते हैं। वन शुड मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सोटस एंड दैट ऑफ माइग्रेशन। एक्सोटस मीनिंग पलायन एंड माइग्रेशन मीन्स प्रवास। एक्चुअली पलायन तब होता है जब व्यक्ति धार्मिक और राजनीतिक कारणों से क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश हो जाए, जिस तरह लालू राबड़ी सरकार में आतंकराज के दौरान हुआ। अभी तो काउंटर माइग्रेशन है। आपको जानकारी होगी, इन्वेस्टर्स मीट में 1.80 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है। सर, प्लीज, और मोर देन 420। हाँ, 12 इथेनॉल कंपनियां। और आपको पता है वी एक्सेल मोर देन 700 कंपनी। और जहां तक जन सुराज का प्रश्न है, दे आर पॉलिटिकल बाय प्रोडक्ट। दे हैव नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ बिहार।
Actually, they just try to they are परिमल जी, doing परिमल जी, नौटंकी type of activity in Bihar. आपका क्या आपको secret याद crush होगा? है क्या प्रशांत किशोर पे? आपको याद ही Has he होगा? got a secret crush on आपको प्रशांत? याद होगा? He is बीपीएससी के obsessed. No, no, छात्रों he's not को letting- he's not इन्होंने letting me talk. बीपीएससी के छात्रों Can को I- इन्होंने can I- बरगलाने no, का no, प्रयास one किया second. और जब No, छात्र one नहीं second. माने तो Can ये we- बोलने लगे कि one अरे second, मैंने one आपको second. खाना दिया, मैंने आपको कंबल दिया, there's a हमारे difference. पक्ष में There's a बोलो. अब difference इस तरह between- के ड्रामेबाज देखिए, व्यक्ति JDU जी, जो please. पॉलिटिकल फ्रॉड है क्या- बिहार में कोई स्थान परिमल जी, नहीं है. please. There's a difference. No. I'll finally come He's back. not letting me speak. So once Very quick response Please, from you. can I please talk? Can you please respect somebody else on this table? This is what you've been doing in Bihar for so long. इतना entitlement अच्छा नहीं Anukriti, है. no anger. Litti choka No, इतना Nidhi. entitlement अच्छा नहीं है. See, the thing is, he's talking about migration. Has he heard of something called distressed migration? The other day I was told कि क्या है बिहार का प्रॉब्लम, पंजाब के भी तो जाते हैं कनाडा डॉलर कमाने. This is the kind of insensitive comments that have been coming from JDU and BJP combined. Okay. सबसे पहले second thing. No. One second. You can't. You cannot, because the kind of education and health numbers, the kind of education and health numbers these people have been rattling off, we have had absolutely zero progress vis-a-vis of their participation in government as well as corporate jobs from people who have actually graduated from Bihar. Number two, the health budget of this state has been going back to the center for the past 6-7 years in a state where we have one doctor for 50,000 patients. That's the kind of numbers we're dealing dealing with. Now, my only request to anybody who's in the government, just to kind of defend your party, at least don't be cruel towards Biharis who are suffering. I'm not going to give this mic away now. No scope Very of- quick responses from No, all no. of you, and then I want to move further and begin close. ऐसे भी जन सुराज घर घर बन रही है शराब, चुनाव जीतने के लिए घर घर शराब डिलीवर हो रही है, घर घर शराब बन रही है. 30,000 करोड़ जो एक्सचेकर में जाना चाहिए वो आपके प्राइवेट पॉकेट्स में जा रहा है. 18वीं शताब्दी में हमारे भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाते हैं और वो तब लिख रहे थे. पिया गई ये औपनिवेशिक दौर की बात है, ये कॉलोनियलिज्म की बात है, जब माइग्रेशन मील मजदूरों को गुलाम बनाकर रखा जाता था. तब वो कहते थे कि पिया गई ने कलकतवा है सजनी, सिरवा में छतवा नहीं खे पैरवा में जूतवा नहीं खे हे सजनी. आज तक आप ये बात नहीं बदल पाए, ये नैरेटिव 200 साल होने जा रहा है सर. आप कितना वाटर बॉटरी करेंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल. मैं अपना कंट्रीब्यूशन तो बता रहा हूं. मेरा तो 18 महीने में, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं. मेरा 17 महीने के सरकार में, मेरे 17 महीने के सरकार में हमने मैं देखिए, मैं एक गर्व के साथ कह रहा हूं. नहीं हुजूर, नहीं वो मैं उसके लिए नहीं हूं. मैं बहुत ईमानदार, मैं ईमानदार पॉलिटिक्स में विश्वास रखता हूं. मैं ये सब इतना वो नहीं करूं. मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में अभी मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता रहा हूं. सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं. मुझे अपने हेल्थ के बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं है. मुझे एक छोटा सा माइनर अटैक आया पिछले महीने, ठीक है. मैं आपके सरकारी अस्पताल में लेकर के लोग वहां कर गए, वहां जो भी हालात था. उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहां उसने पता नहीं क्या सिर्फ बिल बनाया, क्या टेस्ट किया कुछ पता नहीं. सेकंड टाइम में मैं यहां के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गया. सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज. बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गया जिसका नाम मेदांता है. सुन लीजिए. नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में. वहां मेरा नाम मेडिकल हिस्ट्री पूछा. सुन लीजिए ना, बोलने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए. आप बोलिए ना. बिहारी है ना हम. वो सुनिए, वहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ. हमारा ना मेडिकल हिस्ट्री लिया गया ना, हमसे ये पूछा गया कि आप कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. और मुझे 4-5 घंटे में एक प्रॉपर इंटिमिडेट करके एक टीम जो बाउंसर्स की है, डॉक्टर अवेलेबल इमरजेंसी में नहीं है, और वो कौन लोग चलवा रहे हैं और किसके संरक्षण में हो रहा है, स्टेट क्या मॉनिटर कर रहा है. दूसरी घटना, एक छोटी सी अंतिम रिमार्क्स, ठीक है. मेरे सामने में, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, सबूत हूं, मेरे पास रिटन दस्तावेज है. जात के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करते हुए पीटा गया एक परिवार को. एक छोटा माइनर बच्चा जो 9 साल का है, उसको जेनाइटल
हमला किया गया, उसको सीरियस हर्ट है, उसका एमएलसी होता है, मुकदमे के लिए थाना आमस जिला गया में पड़ता है, वहां भेजते हैं, वो एफआईआर नहीं दर्ज करता। मैं एसएसपी को फ्रंट पे बैठकर मैं बोलूं, बच्चे को लेकर बयान दिलवाता हूं, एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आप सुन लीजिए ना, ये बिहार है जब चंपा बिस्वास जो आयुष की पत्नी थी, मैं प्रत्यक्ष तौर पे खड़ा हूं। सो लेट मी स्पीक। 30 दिन जुलाई के 57 मर्डर। ये हेमलता यादव के पुत्र के विरुद्ध यदि एफआईआर लिखाने जाती थी तो लालू जी बोलते थे कि मैनेज करो। देखिए लालू जी कहते थे नहीं, लालू जी कहते थे मैनेज कीजिए। क्या सोचेंगे? टू गो थ्रू 57 मर्डर होते हैं जुलाई में। समझिए 30 दिन में 57 मर्डर। क्या दयनीय स्थिति थी बिहार की। और जहां तक ये व्हाटअबाउटरी का खत्म करिए बॉस। मैं कांग्रेस और आरजेडी दोनों से ये बात पूछना चाहता हूं, जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत ने जीएटीटी का भाग हुआ, डब्ल्यूटीओ का सिग्नेटरी मेंबर भारत है, इन्होंने, इनके वाणिज्य मंत्री ने सिग्नेचर किया था। जो विश्व पर ग्लोबलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर जीएटीएस होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिंग सर्विस। सुन लीजिए, अब ट्रेडिंग की बात करेंगे। अब देखिए लालू जी बिहार में पैसा के बल पर, चारा घोटाला वाला पैसा के बल पर तेजस्वी जी को बाहर पढ़ने के लिए भेजे, 9वीं फेल कर गए, खेलने के लिए वहां फ्लॉप किए। सुन लीजिए, व्यक्ति को आप माइग्रेट भी करवाइएगा तो रेमिटेंस कहां से आएगा? बिहार की जनता को ये लोग चाहते हैं, समझते हैं जागीर है, जागीर नहीं। अरे जागीर कुछ नहीं, डिस्कशन तो करिए। जहां तक जल सुराज का क्वालिटी डिबेट नहीं है, प्रारंभ होने के पहले समाप्त हो गई। क्वालिटी डिबेट नहीं है। सुनिए, आपने जो कहा कि इनके नेता I know ने this is a साइन किया serious था। side. I know it's an emotional, serious conversation, and I don't want to make this frivolous because this is about people. Whether the opposition and the government are speaking, both are emotive issues. I'm going to come down. I'm completely out of time. Thank you all for joining us, and I'm very glad that all of you have enjoyed this. I want to ask one final question to all of you, including Prabhakar and Baba finally, in that sense that what's the one thing that you are envious about, let's say, other states? I don't want to say here or there. What's the one thing you are envious about other states and you think Bihar should have, which it ought to have, but it doesn't have? Quick response. We have the commitment to provide a job to 1 crore youth in Bihar during 2025 to 30. And Bihar will act as a Bharat Guru and Bharat will act as a Vishwa Guru. Under the leadership of... He should be first talking about how many jobs he has given in past 20 years. What is it that you want And Bihar one thing that I'm really envious is about development. Today I feel extremely pained when I find that unskilled laborers are going and cutting paddy in Punjab and Haryana, working as security guards, working as auto rickshaw drivers. So Bihar needs in this heated growth. argument and intense debate, हम लोगों ने कई पॉजिटिव पॉइंट छोड़ दिए। आज बिहार के किसी भी कोने में 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। बिहार में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुआ है, नालंदा, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, आपके पास एयरपोर्ट्स का जाल बिछा है। और एक चीज मैं बता दूं, आज बिहार का एक फाउंडेशन हुआ है और 1,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बिहार आज 50%। What is it that you want? What is it that you want? Bihar has a good future. We want Bihar to come up at a national stage and lead this country. बिहार के हर घर में नौकरी हो, बेरोजगारी दूर हो, हमारे जान माल की सुरक्षा हो, सड़कें सुनी ना हो, और ये जो बात कह रहे हैं सो कॉल्ड डेवलपमेंट का, कंक्रीट का जंगल बिछाने, जाल बिछाने का, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के तहत जो यूपीए का एग्रीमेंट था, उसी में पूरे देश में आज भी हो रहा है। दूसरी बात, व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि मैं बिहार में रहूं, मैं चाहता हूं कि मैं बिहार में रहूं, मेरा काम का जो लेवल है, जो भी मैं काम करना चाहता हूं वो बिहार से ऑपरेट हो, ना कि बस एक इम्बोसिंग करने के लिए एक मैगजीन को भी मुझे दिल्ली लेकर जाना पड़े।
What I really would like for my state, because see हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, प्रिविलेज स्कूल कॉलेज में पढ़े, हमसे कोई पंगा लेने की हिम्मत करता नहीं है. बट हमारे ऐसे करोड़ों भाई बहन हैं जो रोज इंसल्टेड हो रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री. दैट नीड्स टू स्टॉप. और हम लोग उसको रोकेंगे, और इसी वजह से रोकेंगे क्योंकि जनसुराज लगातार जाति समीकरण से ऊपर उठ के बिहार को भारत के 10 अग्रणी राज्यों में लाने की बात कर रहा है. And my little problem with whatever has happened today in the past 35 years is कोई वर्क एथिक नहीं है. जहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल पैसे कमाए जा सकते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया जा रहा है, जो बेसिक काम है उसको उपलब्धि का नाम दिया जा रहा है. एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू चेंज. वी नीड टू बिकम a little more like some northeastern states and Kerala especially. All right, Kerala, perhaps the Yes. other states as well. But Yes. Prabhakar, before I give you the last word, and then Baba as well, I want to ask you one question. For instance, in Karnataka, IT ministry, the information technology ministry, artificial intelligence, these are important ministries across the south of India in most of the states. Is there a strong IT push in Bihar? Is there a push towards the future that's possibly I mean, if you playing out in- compare it with the states like Karnataka or for that matter Tamil Nadu or Kerala, no, we don't have that kind of push. And I mean, I don't know whether how many people on this table actually know who the IT minister of the state is. So they would know who the road construction minister is, but I mean, they would not know the name of the IT minister because That's the big stereotype. That's a big stereotype. And coming to your question, actually, I mean, being a proud Bihari, I would want my state to be ahead of Karnataka, that is your state. Gujarat, that is the most talked about state. Maharashtra, why not? On all parameters, and that would be the day I want to see living that day actually. All right, lovely comment from Prabhakar. Go ahead, Baba. मेरा मानना है, अभी भी मैं बिहार को इस चीज़ के लिए प्राउड करता हूं कि मुझे लगता है कि बिहार अभी तक कॉम्युनल स्टेट नहीं है. आप बगल का स्टेट देख लीजिए, वहाँ पे हिंदू मुसलमान देख लीजिए, यहाँ पे करने की कोशिश बहुत की जाती है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है ये जो स्टेट है बिहार, जो हमारा स्टेट है ना, वो हार्ट में ना सेकुलर है. और मैं चाहता हूँ ये सेकुलर फैब्रिक जो है बना रहे, चाहे कितना भी इलेक्शन आ जाए. वो दिन सबसे बुरा होगा मेरे लिए जिस दिन वो बिहार जो है वो कम्युनल स्टेट बन जाए. Oh, that's a fantastic point. Thanks very much, Baba. Thanks to all of you all. You know, most important is this, that, you know, we've enjoyed a nice meal. I think I've finished both my litti and my idli. Anukriti has eaten well. Syed has eaten. You've enjoyed, Mr. Nikhil. Anand, what did you like better? Idli sambar, idli choka, or litti sambar? I like both. What's the verdict? What's the verdict? The combination, I'm sure none of you would have tried this combination. This fusion of food, what's the verdict? Did you enjoy? Excellent. Biharis have always believed in Ganga Jamni Sanskriti, you know. We want a mix of all ideas, all food, everything to come together, and that's the beauty of democracy that we want to fight for and want to preserve. I want to know one final mischief question. Which is more popular in India, idli sambar or litti choka? Because idli sambar has invaded Bihar, litti choka is yet to invade the south of Idli India. sambar would win hands down. So I mean, Basically litti and chokha happens to be a more prevalent food item because of the fact that we Biharis are everywhere. मैं विश करता हूं कि वो दिन देखूं अपने लाइफ टाइम में, जैसे जो सिंघारा हम लोग कहते हैं, जिसको समोसा कहते हो, वो जैसे ऑफ द सेल्फ बिक रहा है ना, वैसा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हर जगह वो लिट्टी बिकने लगी. Arey, what a fantastic conversation, and we've got the dessert as well. Is hosting a foreign dignitary in Hyderabad House. Lovely. He should be able to serve litti choka. All right, let's keep the politics out of litti choka, idli and sambar. Thanks very much to all five. ये खीर है मखाना का. अच्छा. बिहार जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मखाने का. Very nice. Makhana kheer. I'm going to enjoy my makhana kheer. Thanks very much for watching. This debate will go on through these elections, but we had a fascinating conversation in many ways on the deep issues of Bihar, but also addressing about what next for the state, what the aspirations are. We'll continue these conversations with people who are apolitical, the Gen Z of Bihar, the women of Bihar, the migrant workers of Bihar. Stay tuned. Keep watching Namaskaram Bihar.